इफेक्ट ऑफ ग्रेन साइज ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स इफेक्ट ऑफ ग्रेन साइज और इस पर होने वाली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के इफेक्ट्स हमें देखना है। तो जैसे कि बात कर रहे हैं कि ऑल सॉलिड मेटल्स आर क्रिस्टलाइन and the crystals, their grains are made up of several atoms. This is the sequence process that all solid metals are crystalline and the crystals, their grains are made up of several atoms. And the grain size has important effects on the mechanical properties of a metal, and the size of the grains depends upon the number of factors. The size of grain depends करता है हमारा number of factors पर, but the principal one of the heat treatment to which the metal has been subjected. तो बात करें कि जो मेन हीट ट्रीटमेंट है जिसके थ्रू ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो ग्रेन साइज हैज एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल, और the size of grain depends करता है upon the number of factors, but the principal one is the heat treatment to which the metal has been subjected. When a low carbon steel is heated, there is a no change in grain size up to the lower critical point, and it is the same for all steel, that is 723 degrees Celsius, and at this temperature birth of new grain take place. That is the temperature याद रखना है आपको कि when a low carbon steel is heated, there is a no change in grain size up to lower critical point, and it is same for all steel 723 degrees Celsius. This is the temperature point आपको याद करना है. और at this temperature birth of new grains take place. At the upper critical point, the average grain size is minimum. तो यहाँ ध्यान रखना है कि जब एट द अपर क्रिटिकल पॉइंट है तो जो एवरेज ग्रेन साइज होगा वो मिनिमम होगा. अपर क्रिटिकल पॉइंट पर एवरेज ग्रेन साइज क्या होगा? मिनिमम होगा. फर्दर हीटिंग ऑफ स्टील causes an increase in the size of the grains, which in turn governs the final size of the grains when cooled. In effect, heating of the steel causes an increase the size of the grain, which in turn governs the final size of the grains when cooled. Some steel, like medium carbon steel and many alloy steels, when heated to a higher temperature known as a coercing temperature. So this is known as your coercing temperature. जब स्टील जैसे कि मीडियम कार्बन स्टील और मैनी एलॉय स्टील जब हम हीटेड करते हैं हायर टेम्परेचर पर तो उन्हें बोलते हैं कोएर्सिव टेम्परेचर. और इनका जो ग्रेन साइज होता है वो इंक्रीज होता है बहुत तेजी से. द ग्रेन साइज इंक्रीज वेरी रैपिडली, एंड द कोएर्सिंग टेम्परेचर इज नॉट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड मे बी चेंज बाय प्रायर हॉट और कोल्ड वर्किंग एंड हीट ट्रीटमेंट. तो हमारा कोएर्सिंग टेम्परेचर है वो इज नॉट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, बट ये हमारा क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है बाय प्रायर हॉट या कोल्ड वर्किंग एंड हीट ट्रीटमेंट कंडीशन. तो आगे बात करते हैं जो क्वेंचिंग ऑफ स्टील है, दैट इज अ क्वेंचिंग ऑफ स्टील फ्रॉम द अपर क्रिटिकल पॉइंट रिजल्ट इन अ फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, वेयर एज स्लो कूलिंग या क्वेंचिंग एट फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर यील्ड्स अ कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर. Quenching of steel from upper critical point result in a fine grain structure, whereas slow cooling या quenching from a higher temperature yields a coarse grain structure. तो जो coarse grain steels है are less tough and have greater tendency for distortion those having a fine grain. और फाइन ग्रेन स्टील की बात करते हैं तो इन एडिशन टू बीइंग टफर एंड मोर डक्टाइल एंड हैव लेस टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट या क्रैक ड्यूरिंग द हीट ट्रीटमेंट. इसमें जो मेन बात की जाए इसके जो पॉइंट्स की, तो टेम्परेचर पॉइंट एट विच द चेंज स्टार्ट्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड लोअर क्रिटिकल पॉइंट, और टेम्परेचर पॉइंट जहां पर चेंज एंड्स हो जा रहा है इन द हीटिंग इज कॉल्ड अपर क्रिटिकल पॉइंट. तो लोअर क्रिटिकल पॉइंट एंड अपर क्रिटिकल पॉइंट. लोअर क्रिटिकल पॉइंट क्या है? जहां पर टेम्परेचर पॉइंट एट विच द चेंज स्टार्ट होता है ऑन हीटिंग का, वो लोअर क्रिटिकल पॉइंट.
और जहाँ पर टेम्परेचर पॉइंट जहाँ पर चेंज एंड हो जाता है वो कहलाता है हमारा अपर क्रिटिकल पॉइंट. इट वेरीज अकॉर्डिंग द कार्बन कंटेंट इन द स्टील. एंड देखिए हमने यहाँ बात करी कि जो कोरस ग्रेन स्टील्स आर लेस टफ एंड हैव greater tendency for distortion or those have a fine grain. और fine grain steel क्या है? Fine grain steel in addition to being tougher and more ductile and have less tendency to distort या crack during the heat treatment. तो नॉर्मल लोअर क्रिटिकल पॉइंट अपर क्रिटिकल पॉइंट देखा और फिर हम लोगों ने साथ ही साथ जो फैक्ट्स हो रहे हैं उनको यहाँ पर स्टडी आउट किया.